हम लोग एक पॉइंटर डिस्कस कर सकते हैं ग्रुप 18 एलिमेंट्स। ग्रुप 18 एलिमेंट्स इनर्ट गैसेस, दे आर मोनो एटॉमिक। उनको बोलते हैं नोबल गैसेस। कौन सी गैसेस बोलते हैं? नोबल गैसेस। ये क्या रहती है? दे आर मोनो एटॉमिक। They are monoatomic and sprangly soluble in water. Sprangly soluble in water. Noble gases have very low melting point. Melting point and boiling point. Helium has the lowest boiling point of any known substances. Helium has very lowest boiling point. Helium has lowest boiling point. Noble gases have very low melting and boiling point because in this they are monoatomic. पहला तो ये सब क्या है? मोनोएटॉमिक गैसेस है, मोनोएटॉमिक। और दूसरा, the only type of interatomic interaction which exists between these are van der Waals. Van der Waals. Only van der Waals forces are there. Van der Waals forces are there, but therefore they can be liquefied at very low temperature and have very low melting और बॉइलिंग पॉइंट्स। इसके बाद में हम लोग लिख सकते हैं एनामोलस बिहेवियर। एनामोलस बिहेवियर। एनामोलस बिहेवियर। एनामोलस बिहेवियर किसका लेना है अपने को? ऑक्सीजन। एनामोलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन शो फॉलोइंग एनामोलस बिहेवियर। सबसे पहले एटोमिसिटी। एटोमिसिटी। ऑक्सीजन इज a diatomic molecule while other are polyatomic molecule. Oxygen is diatomic and others are polyatomic like P4, S8. Magnetic properties. Magnetic oxygen is paramagnetic. Paramagnetic. And other elements. Oxygen paramagnetic, other are diamagnetic. उसके बाद में डिस्कस कर सकते हैं अपन ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीजन शो -2, -1 and +2 oxidation state, while other elements exhibit +2, -2, +4 and +6। ठीक है। Oxygen cannot show the desired oxygen state due to the absence of vacant d orbital. Vacant d orbital is absent. So it shows this type of oxidation state. और बोल सकते हैं हम लोग नेचर ऑफ हाइड्राइड्स। एक लास्ट पॉइंट है
Nature of hydrides. Hydrides of oxygen, that is liquid, is hydrides of hydrogen, that is liquid. Water is liquid at room temperature, while hydrides of other are gases. Other elements hydrides are gases. Other element hydrides are gases. और क्या बोल सकते हैं अपन? कॉमनली कोवैलेंसी ऑक्सीजन के अभी डिस्कस किए हमने 2 है, लेकिन अदर एलिमेंट्स को उनकी कोवैलेंसी एक्सीड हो सकती है. The anomalous behavior of oxygen is due to 2 points. First, small atomic size, high electronegativity, and absence of d orbitals. ये 3 कारणों के कारण ऑक्सीजन अलग प्रॉपर्टी शो करता है. उसका बिहेवियर क्या है? एनामोलस है. सेम बिहेवियर इज फॉर फ्लोरीन ऑल्सो. एनामोलस behavior of फ्लोरीन. फ्लोरीन क्या करता है? द फर्स्ट मेंबर द ग्रुप 17, इसका फर्स्ट मेंबर ऑफ ग्रुप 17, स्मॉल एटॉमिक साइज, absence of d orbital and high electronegativity. High electronegativity and absence of d orbital. और एक पॉइंट हो सकता है लो एफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी. लो एफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी. सम एनोमलस प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लोरीन. कौन सी प्रॉपर्टीज है फ्लोरीन की एनोमलस प्रॉपर्टी? नंबर 1, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल are all high for fluorine. Then expected trends shown by other halogens. Number 2, ionic and covalent radii melting point. Ionic radii, covalent radii, melting point and boiling point and electron gain enthalpy are quite lower than expected. Lower than expected. और क्या बोल सकते हैं? मोस्ट ऑफ रिएक्शन ऑफ फ्लोरीन है ना, फ्लोरीन के रिएक्शंस क्या रहते हैं? आर एक्सोथर्मिक. So what is the reason for this? Due to short and strong bond.
due to short and strong bond. और बोल सकते हैं हम लोग कि fluorine only form oxo acids like HOF. फ्लोरीन क्या कर सकता है? फ्लोरीन फॉर्म कर सकता है फ्लोरीन एसिड्स लाइक HOF जैसा एसिड क्या कर सकता है? ये फॉर्म कर सकता है. और अदर हैलोजेंस दे कैन फॉर्म एक एसिड बनाता है और बाकी के मेनी एसिड्स, मेनी ऑक्साइड्स, मेनी ऑक्सो एसिड्स. दे कैन फॉर्म मेनी ऑक्सो एसिड्स बट फ्लोरीन नॉट. अब आते हैं अपन केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे. केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या बोलती है? केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स. केमिकल प्रॉपर्टीज़ 16, 17 and 18 group elements. 16 में क्या हो रहा है? The group 16 element have the valence electronic configuration. क्या है यहाँ पे? NS2 NP4. They attend a noble gas configuration either by giving 2 electrons or by sharing 2 electrons. ठीक है. So they generally show oxidation +2 or -2 or covalency. Oxygen being highly electronegative shows a common oxidation state of -2. Oxygen show common oxidation state -2. And in case of OF2, it shows the oxidation state of +2. And in peroxide, it shows oxidation state of -1. Other elements exhibit other elements of this group exhibit +2, +4, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है ना. इसमें भी ये वाला कॉमन रहता है. द सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ये क्यों ऑकर होती है? ज़्यादातर क्यों मिलती है? बिकॉज ड्यू टू इसका एक ही कारण हो सकता है, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट. इनर्ट पेयर इफेक्ट. बॉन्डिंग इन +4 and +6 ऑक्सीडेशन स्टेट कैन प्राइमरीली कोवेलेंट है ना. ये जनरली कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं. ठीक है. अब बोल सकते हैं हम लोग, नाउ वी कैन डिस्कस दिस प्रॉपर्टी अबाउट 17 ग्रुप एलिमेंट्स. 17 ग्रुप एलिमेंट्स में क्या हो रहा है? दे आर रिप्रेजेंटेड बाय देयर वैलेंसी NS2 NP5. They are represented by NS2 NP5. They attend noble gas configuration by gaining 1 electron forming anion or by sharing 1 electron forming covalent bond.
और हेलोजन्स, सारे हेलोजन्स, सारे ऑल हेलोजन्स -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, और क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन एग्जिबिट साइड बाय साइड +1, +3, +5 and +7 oxidation state. This is because they are less electronegative than fluorine and possesses empty d orbitals. सबके पास कौन सा ऑर्बिटल है? empty d orbital. The oxygen state +4 +6 occurs in oxides and oxacids. ये दोनों के oxides and oxacids +4 and +6 ऑक्सीडेशन स्टेट बताते हैं. फ्लोरीन को डी ऑर्बिटल नहीं होने के कारण वो अपना ऑक्टेट एक्सपांड नहीं कर सकता. देयरफॉर फ्लोरीन बीइंग मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एग्जिबिट ओनली -1 ऑक्सीडेशन स्टेट. ठीक है. और हम लोग लेते हैं ग्रुप 18 एलिमेंट्स. 18 ग्रुप एलिमेंट्स. 18 ग्रुप एलिमेंट्स में क्या हो रहा है? वहाँ स्टेबल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. इनर्ट गैसेस हैव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक configuration. They have a stable electronic configuration with complete NS2 NP6 completely filled shell. They have no tendency to gain electron or lose electrons. Therefore, they are zero valent. इनको क्या बोलते हैं हम? ज़ीरो वैलेंट. इनको बोलते हैं हम लोग ज़ीरो वैलेंट. मोस्टली एग्जिस्ट एज मोनोएटमिक गैसेस. हाउएवर xenon has large atomic size and lower IP compared to helium, neon, argon, krypton. Hence, xenon exhibit higher oxidation state. Show higher oxidation state. और क्या बोल सकते हैं हम लोग इसके बारे में? 18 ग्रुप्स के बारे में. The paired electron of the valence shell can be unpaired and promoted to empty d orbitals. So, unpaired electrons are shared with fluorine or oxygen atoms, and covalent compounds showing higher oxidation state such as XeF2, XeF4, XeF6, XeO3, XeOF4 ऐसे कंपाउंड्स ये लोग बनाते हैं ड्यू टू देयर by promoting electron and making it unpaired and promoting to empty d orbitals. तो XeF2 में xenon है ना, अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स आर. हाँ, XeF2 में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, XeF4 में +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, XeF6 में +6. इस तरह से ऑक्सीडेशन स्टेट बताते हैं सिर्फ फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन के साथ, बिकॉज बोथ आर इलेक्ट्रोनेगेटिव, more electronegative element than this, and it have a vacant d orbital. Therefore, we can study their property like this. अब अगर हम लेते हैं केमिकल रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हाइड्रोजन, है ना, केमिकल रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हाइड्रोजन. नेक्स्ट टॉपिक विल बी
chemical reactivity towards hydrogen.